Good morning, students. I hope you are doing good. I am also good, and we are going to start with today's best session for accounting. Today, we are going to see some basic journal entries. Today, I want to develop your thinking about journal entries, and I hope in last session you have finished with your basic journal entries. Okay, so have you written in your 100 pages book? And before starting any session, first we will recall all basic rules of account. So what are basic rules of account, sir? It is divided in two parts: modern approach and traditional approach. Traditional approach talks about personal, real, nominal. Chalo, let's quickly revise this. Personal, real, nominal. Yes, let's quickly revise this. Personal, real, nominal. Personal talks about due relationship and settlement relationship. Due relationship is debit the debtor, credit the creditor. Sir, debit the debtor, credit the creditor. Debtor कब आता है? Debtor when arises बेटा, when there is a sales or income for you. And creditor कब आता है? याद करो, crack करो. Creditor when there is a purchase or expenditure. But बेटा, when you are settling your account, your debtor becomes giver and your creditor becomes, yes, receiver. So here your debit the receiver is credit the giver is rule is there. Okay, and after that real account debit, what comes in, credit what goes out, and nominal account debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Now beta, in case of modern approach, what is the rule? What is the rule for modern approach? Asset debit balance. चलो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, फटाफट फटाफट फटाफट, एवरी वन ऑफ यू. यस, टेल मी गुड मॉर्निंग इन द कमेंट सेक्शन. जल्दी से जल्दी से जल्दी से. यस, आई एम फाइन समीर, मनोज, आई एम फाइन बेटा. रोहित फाइन है बेटा. चलो जल्दी 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 जल्दी. सुप्रभात बेटा, सुप्रभात. ओके, यू हैव टू राइट दिस रूल्स ऑफ अकाउंट्स इन कमेंट सेक्शन, नो, डेली बेसिस पे. Yes, I won't recall every time. You have to write it in the comment section. If you want to develop your accounts, देखो आपको आपका अकाउंट्स यदि डेवलप करना है, मैं पहले ही बोल देता हूँ कमेंट सेक्शन में आके रोज टाइप करने का. यदि यू वांट टू डेवलप योर अकाउंट थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस, सी दिस इज ऑनलाइन, सो यू हैव टू बी वेरी इंटरेक्टिव. इट विल सेव योर टाइम एंड डेफिनेटली इट विल इंप्रूव योर नॉलेज. क्योंकि यहाँ पे जो बंदे हैं, यहाँ पे जो भी फैकल्टीज है, वो फैकल्टीज आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताने वाली है. बट एट द सेम टाइम, at home, if you are at home, you have to understand this concept thoroughly. Okay, and recall this concept thoroughly. बेटा फायदे भी है, नुकसान भी है, पर हमारे फायदे ज्यादा है ऑनलाइन क्लासेस के. यस, नेक्स्ट. Okay, so what is the second rule? Equation, sir. Equation approach. What is the equation approach? So modern approach is asset is equal to liability plus capital. Asset is debit balance, liability is credit balance, and your capital is also credit balance. Sir, capital में क्या होता है? In capital, income minus expenses is equal to capital, because income and expenditure will transfer to your capital account, because whatever profit you derived from the business, it will get transferred to capital account. So capital account में क्या होगा? In capital account, income minus expenditure is equal to profit, and that income minus expenditure means income credit, expense debit. But suppose expenses are more than income, so beta it will be loss and it has a debit balance. Okay, expenses debit, income less, so it has a debit balance. So I hope you remember all these entries. And today what we are going to see, sir, what is the role of the chartered accountant in unit number 1. So what we are going to see, what are the rules? Oh yes, what are the role of the chartered accountant, that we are going to see it in this today's session. Okay, so many of you are not aware, sir, what we are going to be after becoming a chartered accountant. So tell us the exactly where we can give the services. And today we are going to see that कि हम लोग आज देखने वाले हैं हमारे रोल को, कि हम लोग सीए बनने के बाद आगे क्या कर सकते हैं. ओके, सो इन योर अकाउंटेंसी you have this role of chartered accountant also. So beta, today's session is very important. Don't miss it. Don't miss it. And today I'm going to explain you. Acha, have you written rules of accounts? Yes, say good morning, say good morning, say good morning बेटा, every one of you. चलो जल्दी से गुड मॉर्निंग बोल दीजिए हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स बेटा. क्यों आज का नंबर थोड़ा कम लग रहा है मुझे? यस, डोंट गिव अप. आज का नंबर डेली बेसिस से थोड़ा कम लग रहा है. सो मेनी स्टूडेंट्स हैव नॉट येट ज्वाइंड. 11 o'clock इज अ टाइमिंग वेयर यू मस्ट ज्वाइन. आप आपकी जितने भी है बेटा, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे हैं, अपने कुर्सी की पेटी बांध लो और फ्लाइट के लिए तैयार हो जाओ. ओके, सो कोई भी बेटा 11 बजे के बाद जो भी पोजीशन में होंगे, कम टू योर लैपटॉप, मोबाइल, नोटबुक, एवरीथिंग बेटा. 11 बजे के बाद नो एक्सक्यूज, डोंट गिव एनी एक्सक्यूज एट 11 o'clock. ओके, चलिए. सो किशन जी, आई एम गुड बेटा. पिनाबेन प्रजापति,
Good morning, sir. Jui ji, good morning. Yash ji, Radhe Radhe. Mohammed ji, yes. Rani, good morning. Chaitanya, Nikita, Renuka, Bijit, Sahil, Kinjal. I can't read all names. हाँ बेटा. Sir, journal entry 6 से 9 बता दीजिए. Yes, बेटा. Today we are going to see homework also. Sir, this accounts paper will be objective or subjective, but obvious it is a subjective paper. And there will be some MCQ based testing also. So I will discuss paper pattern afterwards. Not now. I'm going to discuss it on one day. So अभी तो हम लोग क्या करेंगे आज तो हमारा यूनिट 1 हमें कंप्लीट करना है एंड यूनिट 2 के साइड पे प्रस्थान करना है. ओके सर प्लीज टेक माय नेम आदित्य जी आपका भी नाम ले लेता हूँ कोई बात नहीं. Yes. Please tell me homework is completed or not. We will don't give up in our life. One day we will become a chartered accountant. Yes, Samir ji. Very good. दुआ करता हूँ आप जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे. चलो. So, what is the role of chartered accountant? Role is very simple. You can do area of services. You can do practice or you can be in इंडस्ट्री में गए तो यू आर गोइंग टू डू जॉब. अभी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स सी आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट देयर वाज बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी कि व्हाट नाउ आई विल डू. ओके 2 days I enjoyed a lot. 2 days I enjoyed a lot. I will discuss one story with you. Okay, after that after that it was very difficult for me to decide कि which profession, whether I will go in industry, I will do job इन 10 to 6 टाइमिंग वाला एंड सैटरडे संडे मस्त हॉलीडे लेना वो लाइफ एंजॉय करूं या आई एंटर इनटू अ प्रैक्टिस. ओके एंड सेकंड वन माय ड्रीम वाज यस आई वाज टीचिंग एट दैट टाइम बिकॉज आई taught more than 10-15 students before becoming a chartered accountant and they cleared their foundation exam and inter exam. So I was very passionate about teaching. Before becoming a chartered accountant, I started some beta classes, not at very professional level, but at least एक रूम में 15-20 बच्चे वहां पे बैठते थे. Okay. So I started my journey before becoming a chartered accountant in teaching profession. So I decided that yes, money is a secondary for me, but I thought that passion is teaching, and therefore but I started my classes after becoming chartered accountant. But at the same time, I was doing hard work for my practice also. 10 to 5 6 o'clock तक मैं practice करता था, and before that beta I was taking classes in the morning and in the evening. So three of my friends, two of my friends and me, we were three friends who started their practice. So we started our practice at the age of 22 and a half. I was a chartered accountant, and then I started teaching also career wise, and I started with my practice. Okay, so area of service. So what services better we had provided at time? Income tax service. At that time there were VAT and service tax. So we provided VAT and service tax service, that is indirect tax. Okay, so maintaining books of accounts. So better normally maintaining books of accounts is a client work, but better many chartered accountant they help client to maintain their books of accounts. They provide some assistant to them, they maintain properly because it's like outsourcing. So first area, yes, we maintain chartered accountant. uh yes, what maintenance of books of accounts. Okay, then maintenance of books of accounts. Second one, statutory audit. Statutory audit, betas, what is statutory audit? Statutory audit means, as per Companies Act, you have to compulsory have to books of you have to audit books of accounts. Books audit means what? Audit means checking of books of accounts. What is audit? Taking books of accounts. And statutory by law enforces you to do this. Okay, तो law compels you. तो law क्या करता है? आपको compulsion करता है. So statutory audit ये क्या होता है? Statutory audit मतलब checking of books of accounts, and we are the best people who can judge others. Okay, so for accounting purpose, I'm not saying about their actual life, but yes, we are the best people who can judge how you have written books of accounts, how they maintain, client has maintained their books of accounts. We are best people to judge it. Okay, आगे. Next, internal audit. See, beta, internal audit is also very important. Internal audit means what? Internal audit means you will visit your client place. Internally means what? In between of some years. Okay, statutory audit you normally do after 31st of March, before the approval date. Now that things beta we will
teach you at inter level. So see, statutory audit is normally done after 31st of March. Normally, I'm not saying exactly every time, but statutory audit throughout the year. But internal audit, you have to present your reports, like internal reports. आपकी internal exams होती थी ना, कि 3 months के बाद, 6 months के बाद, 9 months के बाद, हम लोग उसको बोलते थे तिमाही, 6 माही, और उसके बाद 9 माही, ऐसे एग्जाम्स हमारे टाइम पे होते थे. सो इंटरनल ऑडिट, योर सेमिस्टर एग्जाम, इट्स लाइक इंटरनल ऑडिट. यू आर डूइंग इंटरनल audits meanwhile between the period. Okay, for example, 1st April to 30th June, 1st July to 31st December. So similarly, for internal audit, normally for 3 months. So that auditing and giving report internally is called as internal audit. Taxation, बेटा टैक्स तो आपने पढ़ा ही होगा. टैक्स पढ़ा होगा मतलब नाम तो सुना ही होगा. सो एवरी टाइम मोदी जी के इसमें लिखा रहता है कि यस, गवर्नमेंट के इसके रूल्स है, आपको 30 सितंबर के पहले आपका रिटर्न फाइल करवा दीजिए बिफोर 30th September और 31st July. So that taxation part, who will take care about? So taxation will also be taken care by chartered accountants. We are the people who tells in businessman or might be salaried person, there's income from other sources, house property income is there, then business income is there, other sources income is there, PGBP, profit or gain from the business. Okay, so capital gain is there and salary to hota hi hai. So these are some income sources, 5 income sources, and we are people who tells others कि you have to file your return in the such way. So we are giving best service of taxation also. So chartered accountant जो है वो उसको tax का knowledge. Sir, is it necessary that we should have a degree of chartered accountants about giving this taxation service? No, beta, it is not. But when we are doing this activity, we are at beta टॉप लेवल, वी आर प्रोवाइडिंग. सी, डॉक्टर तो एमबीबीएस भी होने वाला है, एमडी उसके ऊपर, तो ये ध्यान में रखो. और स्पेशल जो सर्जन है, वी आर सर्जन्स बेटा, वी आर सर्जन्स. ओके, सो ऐसा नहीं है कि हमने बीएचएमएस की डिग्री लिया है या दूसरी डिग्री लेके हमने जनरल प्रैक्टिस चालू किया. बेटा वी आर सर्जन लेवल पे लोग हैं. सो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो दूसरे लोग भी प्रोवाइड करते हैं. सो इट डजंट, सर, इंटरनल ऑडिट कैन बी डन बाय other people. Yes, other people also. So statutory audit, they do not have authority. Statutory audit has to be done by the chartered accountant only. Maintenance of books of accounts, sir, BCom person can do, even science person can do books of accounts, but we are best people who can do all these activities. Taxation में भी हम लोग बाप रहने वाले हैं. So management accounting services, management accounting services, management accounting services and consultancy services. See now, beta, we are also giving some decisions to businessmen. So consultancy services, management accounting means we can give them suggestion. You can take a such decision now today only. Yes, I suggested my client कि you go with this activity, so that will boost your sales. Okay, and such decision you must you may give this costing. Okay, for example, normally 150 rupees is the cost of that product. So I suggested him कि you give the costing of rupees 110. And this service, why? He told, sir, we will be in loss. I said no, you will improve your volume by reducing your cost. And if suppose if you do that, your profit will be more as compared to today's profit. And that service of providing consultancy is called as management accounting and consultancy service, sub financial advice. In after becoming chartered accountant, you can give advice where to invest. We are the people who can tell others where to invest. In mutual fund, no, you directly do not invest in the mutual fund. If you don't want to take any burden of investing, so you can go with the mutual fund. But after that also, which mutual fund is the best one, that will be decided. That will be, yes, we will take care about that. We will do study about mutual funds also and shares also, and we'll advise our client where to put money. And that guidance is also called as a financial advice. Okay, other services, there are many other services you can see. So other services in study material, so I cannot read all these in examples. CA in industry, सर CA in industry भी होता है, जो जॉब के लिए होता है, जो जॉब के लिए बना हुआ है, एंड वो अपनी कंपनी को एकदम, ये देखो, हियर सर्विसेज में यू कैन हैंडल एन नंबर ऑफ क्लाइंट्स, बट इन इंडस्ट्री यू हैव टू गिव योर बेस्ट टू ओनली वन क्लाइंट, एंड दैट इज योर कंपनी, जहां पे आप एम्प्लॉई बन जाओगे. यस, इट इज ऑल्सो गुड. इन सीए इन इंडस्ट्री दे आर अर्निंग लाइक now packages are, starting packages are more than 20 lakhs, so you can go with industry also. कितना फीस लगता है सीए एडवाइस लेने के लिए? राजभाव, सीए का जो एडवाइस है वो डिपेंड करता है आपके क्लाइंट के ऊपर, उसके
पेमेंट कैपेसिटी के ऊपर सर ये कभी फिक्स नहीं होता है। सो सीए कभी हमें ये नहीं सिखाया जाता है कि आपने क्या सर्विसेज की फीस चार्ज करनी चाहिए। ये तो आपकी क्वालिटी है, आप सामने वाले को कैसे पैसा चार्ज कर रहे हो। ओके, सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइंट टू क्लाइंट इट डिफर्स। कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो विच आर न्यूली एंटर्ड, सो दे मे हैव लेस प्राइजेस लेस फीस, बट अभी हम लोग जो होंगे बेटा आफ्टर बिकमिंग 10 15 20 years का एक्सपीरियंस, so we people बेटा normally charge more fees, so depending, and जो old people है they are charging more than, because their confidence is much better than our confidence। so बेटा जो old age के 50 60s के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनका तो एक्सपीरियंस भी वास्ट है, उनका अपील में जाना ये करना ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर कि कैसे वो लोग भी प्रीपेमेंट कैपेसिटी रखते हैं एंड यूर रिलेशंस। ओके, सो फीस आर नॉट फिक्स, इट्स नॉट लाइक दैट कि फीस फिक्स होंगी करके। ओके, सो सेपरेट packages for separate people, you can say like that. In CA industry also you won't get a same salary, no. So according to your capacity, according to your ability, you will get the handsome salary after becoming a chartered accountant. Now what happened at my, when I uh, became chartered accountant, we had patience. Okay, we had patience. Now you people normally do not have patience, so everyone wants to enter into best company, and therefore beta now students are more getting attracted towards in industry as compared to practice। तो प्रैक्टिस से ज्यादा आजकल क्या हुआ है कि बच्चों को लगता है कि नहीं आफ्टर बिकमिंग यहाँ कौन स्ट्रगलिंग करेगा सर, ऑलरेडी वी वुड स्ट्रगल अ लॉट in 3 4 years 5 years we gave our best, and now we want a handsome salary. So normally now students are getting more attracted towards in industry as compared to practice, but it's your choice ultimately। सर बेस्ट क्या होता है आवर फ्यूचर प्रीति? एवरीथिंग इज बेस्ट। See, one of my friend, when we started our journey of after becoming a CA, he joined KPMG or Deloitte. I exactly didn't remember, but when he joined, that industry, okay, so he was getting something 10 lakhs rupees at that time, and we were getting only 2 lakhs rupees. But now we are at almost same phase, because after 13 14 years, now whatever he's earning, we are earning at the same level, because in practice you have to keep patience। okay, आपको practice में patience रखने पड़ते हैं। Which one side is good after becoming CA? It's your personal choice, beta. If you are from middle class family, and if you are from beta you know below middle class, so it's better you go with that. Is the personal advice I'm giving you on this channel. Actually, I should not advise you anything, but yes, I'm giving you one advice. If beta you already want to, your family suffers a lot, and if suppose you become a chartered accountant, I will advise you go with the industry, so you do not have to struggle once again. But if you have holding capacity of next 4 5 years, then better you can go with the practice. So you can go with the practice has you know unlimited, you can say sky doesn't have limit. Similar to that, practice you can grow at any level, and salary also better you will go with that, but you do not have to struggle for your practice। you have to keep a patience। I know, I remember some days कि मैं लिटरली हम लोग ऐसा बैठे रहते थे कि भाई क्लाइंट आए, क्लाइंट से कांटेक्ट करे, क्लाइंट फाइल ला के दे, इधर से और आपके नेटवर्किंग के ऊपर ये डिपेंड करता है। सो प्रैक्टिस करने वाले उनको भी बेटा हेड्स ऑफ है, जॉब करने वाले उनको भी हेड्स ऑफ है, बट अल्टीमेटली यू हैव टू सी सम your pop problems, and if you are from middle class family, I will suggest you go with the industry, otherwise practice is best, no problem in that। but you have to, there is a waiting period, there is a waiting period, clients मिलना इतना easy नहीं है। okay, yes, चलिए, so now CA in industry, he works with the functional department and translate the organization aims in terms of financial expectations. So he's working for that. And yes, tell me one example। CA in the public sector enterprises also, PSU में काम किया जाता है public sector में, और even पॉलिटिक्स में भी हमारे कौन गए हैं, एक पॉलिटिशियन जो बताइए मुझे। यस, डू नो द नेम हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही इज गिविंग द सर्विस टू द नेशन। ओके, नेशन के लिए जो सर्विस दे रहे हैं। यस, एनीवन, एनीवन?
सीए इन फ्रेमिंग फिस्कल पॉलिसीज, यस फिस्कल पॉलिसीज नेशन के लिए कुछ करके दिखाओ। तो कौन है जो नेशन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सबको पता होना चाहिए, हु इज अ पर्सन बिहाइंड इट। पीयूष गोयल जी। अमित शाह किसने लिखा है भाई? एंड सीए एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सो पॉजिटिव रोल। राघव चड्ढा जी। someone wrote सीए संकेत शाह, कुणाल जी, जोक ऑफ द डे। ठीक है चलो। अब्दुल कलाम कौन लिखता है रे भाई? चलिए। सो हियर वी हैव फिनिश विद द फर्स्ट यूनिट। यस। सो फर्स्ट ब्रेन जिम इज देयर। Let's see how many of you can answer it. Which qualitative characteristics of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented? Understandability, relevance, comparability. So correct answer is understandability. Correct answer is understandability. Okay. So your financial statement must be understandable. Understandable. Which of the following is not a business transaction? Let's see. कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है? बॉट अ मशीन, बड़ ऑब्वियस बिजनेस ट्रांजैक्शन। पेड टूअर सैलरी, बड़ ऑब्वियस बिजनेस ट्रांजैक्शन। पेड सन्स फीस फॉर पर्सनल बैंक अकाउंट एंड सन फीस इज नॉट अ business transaction. On 31st March 2022, a sale of rupees 2000 and he left with closing stock of 10,000. It is an event. It is an event. Okay. And sales is a transaction. So it is transaction or event. So he left with closing stock. So left with closing stock is an event. Sohan paid a rent. Sohan paid a rent. It's a transaction. It's a transaction. Financial statement do not consider asset expressed in monetary terms, liabilities expressed in the monetary terms, and asset and liabilities expressed in non-monetary terms. Answer is C. Non-monetary. If it is money related, then only we will consider. Non-monetary, we won't consider, which cannot be measured in the terms of money. Users of accounts, creditor, supplier, lender, customer, both A and B. Both A and B. Both A and B is the answer. Financial position of a business is ascertained on the basis of record prepared under bookkeeping process, trial balance, balance sheet. So answer is balance sheet. So financial position, I already explained, it is a balance sheet. Financial statements are part of accounting, bookkeeping, and management accounting. But obvious accounting. Bookkeeping is only recording. Financial statements से accounting है. All of the functions are accounting except decision making, ledger posting, and forecasting. MFDC को control करता है. M for measurement, D for decision making, C for MFDC को D for decision making है. F is forecasting, decision making, DC को C is control and comparison and control. So ledger posting is not a part. Ledger posting is not a part. Bookkeeping is mainly recording of the financial data, but obvious bookkeeping is a recording. 10 number. Purpose of accounting: interpret and record of the business transactions, classify the effects of and dictate the specific type of business enterprise transactions. C is not, exception is there. C is exception is there. And which one is not a subfield of the accounting? Bookkeeping is not a subfield. It's very simple. Thank you. We have finished with the first unit, my dear friends. Yes. How was the first unit? And 100 pages के book में क्या लिखना है? 100 pages के book में role of a chartered accountant you can write in your 100 pages book.
Role of a CA. You can write in your 100 pages book. Yes. Screenshot number one of the day. Then you have CA in industry and CA in fiscal policies, and last one is CA in economic growth. Okay. So this is your screenshot number two. I hope you enjoyed till now. Chaliye. So we will do now. We are going to see unit number two. So you read relationships with others. Beta, I will explain you. Yes, beta. Abhinav, I know that. फिस्कल मतलब बेटा इकोनॉमिक पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाती है उसको बोलते हैं देश का ज्ञान, इसको बोलते हैं फिस्कल। चलो जल्दी से, व्हाट यू टू डू, आपको जाना है यूट्यूब पे, यूट्यूब पे जाके लाइक बटन को प्रेस करना है। ओके, नॉट फ्रॉम ऐप, ऐप से होता है क्या लाइक बटन प्रेस? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, यस बेटा, थैंक यू राज भाव। आई होप यू एंजॉयड अ लॉट टिल नाउ। सो आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा फॉर फर्स्ट यूनिट। सो फर्स्ट यूनिट वी हैव फिनिश विथ, and now we are shifting to next unit, that is unit number 2। एक ही मिनट रुको, एक ही मिनट रुको 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 रुको। अच्छा, what we'll do in first half, now we are going to start with journal entries। so journal entries आपने छोड़ दिए थे। now today beta slightly we'll use a different format। so unit number 1 we have finished with। after break beta we'll see unit number 2 and journal entries, because I just want to finish with your basics today। चलो तो बेसिक्स के पहले, कैन आई टेक अ क्विज? यस, आर यू रेडी फॉर क्विज? गिव इट इन कमेंट इन द सेक्शन, कमेंट सेक्शन में बताइए, गिव मी कमेंट सेक्शन। आर यू रेडी फॉर क्विज 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 क्विज? आप जल्दी से क्विज पे आ जाइए। क्विज खेलना है क्या? अरे वाह, फटाफट मेरे बच्चों ने लाइक बटन को प्रेस कर दिया है। मेनी ऑफ यू, प्लीज 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 viral these all videos to your friends who are not yet watching these videos। it's request to all of you, क्विज खेलना है। सर माझी एक्झाम होती नोव्हेंबरला, मी कन्वर्ट झाले केले। सूरज बेटा, करून टाक ऑर्डर। यस, लवकर करून टाक, मराठी में था ये, इट वॉज इन मराठी। यस, आर यू रेडी? आर यू रेडी फॉर क्विज? यस सर, सो लेट्स प्ले क्विज टुडे। देखते हैं सबसे तेज आंसर कौन दे रहा है। सर लॉ और इकोनॉमिक्स के नोट आ गए, कौश कुणाल जी, आपके भी जल्दी आ जाएंगे।
बेटा सानिया, नो बेटा, अकाउंट्स इज नॉट ऑब्जेक्टिव, अकाउंट इज सब्जेक्टिव। 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे बेटा। सब प्री बोर्ड एग्जाम्स आर देयर, ओके रवीना, don't worry, you manage both studies beta, you manage 11 to 1, you please manage this study. Mathematics and accounts you please attend anyhow. It's my request to that 12th standard students. I know you already are under pressure that you have to give your 12th standard exam also, but beta, if you want to become chartered accountant, you have to sacrifice your 12th also. Okay, sacrifice means I'm not saying that you don't pass in this 12th exam, but you have to manage your study properly. Okay, आपको आपका स्टडी मैनेज करना ही पड़ेगा। और एग्जाम के टाइम पे देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट हम लोग एग्जाम का टाइमिंग मैच करें। बट वेन एवर बेटा यू मिस अवर सेशन, सो इट इज बेटर यू सी दी रिकॉर्डेड वन, उसी दिन रिकॉर्डेड रात को खत्म कीजिए। ओनली टेक ब्रेक व्हेन यूर 12th exam is there. So before that, you can manage your study 5-7 days better. You can take a break, and you know, in 11 12 standard, you can correlate this part also. Okay. So this will help you to clear your accounting knowledge, will help you to clear your 12th exam in with flying colors. Okay. चलिए, चलो शुरू करें। Okay, my dear friends, first example to you. What is the entry for loan taken? चलो, no one will refer the answer. लोन टेकन की एंट्री, लोन टेकनची एंट्री सांगा लवकर। हम्म, एक सेकंड। सो हु रोट वेरी फास्ट? लोन टेकन ची एंट्री सबसे पहले किसने बताई? सो फर्स्ट स्टूडेंट, क्विज की फर्स्ट स्टूडेंट है एंड लेडी है हमारी, गर्ल है, ईशानी बैनर्जी। सबसे तेज आंसर देने वाली। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट फ्रॉम ईआरओ, ईशानी। सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री, राइट, राइट, बैलेंसेस ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का बैलेंस क्या होता है? लेट्स सी हु इज आंसरिंग वेरी फास्ट। हु इज आंसरिंग वेरी फास्ट? सो ईशानी इज द विनर, ईआरओ की स्टूडेंट है। 5 क्वेश्चन में पूछूंगा, 5 क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क यू। लेट्स सी हु इज विनर। सो सबसे पहली विनर तो थी हमारी ईशानी। किसी ने तो क्रेडिट बैलेंस लिखा है, यश। और क्या रे बेटा, सही। यू हैव टू रिवाइज दिस स्टडी। और सबसे तेज आंसर दिया है एसआरओ, फास्टेस्ट फिंगर फास्ट में, अनुश्री। अनुश्री, एसआरओ की अनुश्री। डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। सो एक्सपेंसेस आंसर इज डेबिट बैलेंस। नंबर थ्री, राइट डाउन रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। राइट डाउन रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। हु इज आंसरिंग वेरी फास्ट? रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है?
यस बेटा, शिवेन मांचाल, आई कैन रीड योर क्वेरीज, डोंट वरी। रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट क्या है सर? हु रोट वेरी फास्ट? ओनली डेबिट इज रिटर्न, ओनली डेबिट इज रिटर्न। एंड सबसे तेज आंसर दिया है, सबसे तेज आंसर बाय आनंद साहू, आनंद साहू फ्रॉम सीआरओ। ओ माय गॉड, देर इज fight is going on between CRO, SRO, and ERO. WRO, NRO are not yet. Yes, what is ERO? ERO means Eastern region, Southern region, South wale. CRO, Central. And WRO, West wale, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan. जल्दी आ जाओ भाई। ERO wale, West Bengal. I think Ishani is from, yes, beta, West Bengal, no? Anushri, Southern, where? Anushri, tell me city, beta. Ishani, your city. Anushri ki city. I want. And Anand Bhav, tell me your city names. I am answering. I am taking those names who are winners, who are giving first comment for the answer. Yes. City name, beta. Ishani, कहाँ से हो? Anushri. Where to write Prajwal? Where you are giving the answer, typing this query. You have to be on. Yes. Ishani is from Bankura. Anushri is from Hyderabad. Very good, beta. गोवा वेस्टर्न में आएगा बेटा। मनीष जी जालंधर बोल रहे हैं, पर मनीष जी यू आर नॉट अ विनर। एंड आनंद इज फ्रॉम, यस बेटा, इटार्स, इटारसी बेटा। यस, वेरी गुड, सेंट्रल वाले। अरे वाह, राज झा इज फ्रॉम मिर्जापुर। वाह वाह वाह। चलो, नाउ लास्ट वन, लास्ट वन। इटारसी से है हमारे आनंद भाव। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन टू यू। जल्दी से बताइए। परचेस गुड्स फ्रॉम संगम, परचेस गुड्स फ्रॉम संगम, व्हाट इज द एंट्री? परचेस गुड्स फ्रॉम संगम। Ravi Rajan, if you are winner, I will take your name. Purchase goods from Sangam. ओके बेटा स्नेहा। सो हमारे विनर है अमर्त्य चक्रवर्ती। ईआरओ, अरे बाप रे, ईआरओ। यस अमर्त्य। ईआरओ इतना तेज कैसे हो गए एकदम? वेरी गुड। अमर्त्य चक्रवर्ती। यस बेटा, टेल मी योर सिटी नेम। अनुश्री हैदराबाद। ईशानी कहाँ से थी? वेस्ट बंगाल। सिटी नेम आई फॉरगॉट। परचेज गुड फ्रॉम संगम। एंड विनर बता दिया था मैंने। हु वाज द विनर बेटा? नाम भूल गया मैं इनका। सबसे तेज आंसर किसने दिया था? परचेस टू संगम। बहुत सारे स्टूडेंट्स दे सेंड द आंसर, बट हु वाज द विनर? अमर्त्य, अमर्त्य चक्रवर्ती कहां से है? 100 पेजेस की। यस, सिलीगुड़ी से है, सिलीगुड़ी से अमर्त्य। एंड लास्ट वन, लास्ट वन सी,
If there is a tie between two regions, then beta, we will play the game of last one. But now we can see here, ERO is a clear cut winner till now. ERO ईस्टर्न वाले विनर है. सो लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन. सैलरी, सैलरी पेबल, सैलरी पेबल, सैलरी पेबल. यस बेटा, टेलीग्राम चैनल बना लेंगे, जल्दी ही बनाता हूं. सैलरी पेबल बेटा, जल्दी जल्दी बोलिए. सैलरी पेबल, सैलरी पेबल. नो बेटा, सैलरी पेबल की एंट्री, करेक्ट एंट्री बाय खुशी गुप्ता जी. Khushi is the correct person who answered it. I haven't taught you this entry. I haven't taught you this entry, but yes, just want to see how many of you can answer it. Yes, Khushi kahan se ho? Khushi from WRO. Khushi Gupta from WRO. She is a winner of this entry. ये एंट्री सबसे अलग थी. दिस एंट्री इज बेटा स्पेशल एंट्री. एंड एक्चुअली इफ यू खुशी यू आंसर दिस एंट्री बेटा, yes, hats off to you because I haven't taught this entry till now. Salary payable entry, salary account debit to salary payable, salary account debit to salary payable. खुशी कहां से हो बेटा? WRO. यस. सैलरी टू कैश नहीं, सैलरी टू सैलरी पेबल इज अ करेक्ट एंट्री. ए मेरी खुशी मुंबई की है, हमारे WRO वाली है. बट विनर इज टुडेज रीजन विनर ERO. ERO winner Amartya and Ishani ji. Two winners. चलो clap for you. Very good. ERO के प्यारे प्यारे विनर्स है हमारे. Yes बेटा, enjoyed. I hope you enjoyed this. So network issue in Kashmir, I cannot help you out beta. Use 5G for winning these answers. Okay. चलो कोई प्रॉब्लम नहीं. नेक्स्ट टाइम बेटा न्यू विनर्स विल सी. नेक्स्ट टाइम वापस गेम खेलेंगे एंड लेट्स सी कौन विनर होंगे. ओके. यस, योर एंट्रीज माइट बी करेक्ट. 10 एंट्रीज होंगे तब मजा आएगा. ओके राजभाऊ, नेक्स्ट टाइम विल टेक 10 एंट्रीज. चलो इतना टाइम नहीं है, इंस्टीट्यूट नॉट गिविंग मी प्रॉपर टाइम बेटा, उसके लिए हमें फिर अलग से टाइम नहीं मिलेगा. चलो आई एंजॉयड अ लॉट टुडे. चलो बहुत बढ़िया. और अभी हम लोग प्रस्थान करेंगे टूवर्ड्स अवर जर्नल एंट्रीज, हमारे एंट्रीज के टूवर्ड्स. फटाफट फटाफट. चलो एक बार लास्ट सेशन में क्या हुआ था रे? यस. चलो लास्ट सेशन में क्या हुआ था? वी हैव फिनिश विथ 5 एंट्रीज. नो. Okay. So we started with some examples. SS started a business with cash rupees 1 lakh. Can you tell me last session में कहां तक कंप्लीट किया था? No बेटा, रवि राजन. Yes, I took all 5 self-assessment questions and I answered all 5. Very good. We started with entries and 5 entries और homework भी दिया था. Okay बेटा. Now I will take a quick revision within 5 to 10 minutes of all these entries by traditional approach and modern approach. If you want this, I can upload it for you or you can take a screenshot.
Yes. So SS examples. SS started business with a cash of rupees 1 lakh. Identify accounts. Yes. Now this is the assignment for you. Cash account. And this is a second account is capital. So let's quickly revise. Cash account कौन सा type का account है? Tell to yourself. Yes, it is real account. And SS capital beta is a personal account. Very good. By traditional approach. Have we done with the modern approach also? Modern approach भी हुआ था हमारा. Okay. Debit what comes in. And here SS capital. Credit the creditor. बना लेता हूँ बेटा, टेलीग्राम ग्रुप बना लूंगा, डोंट वरी. सब टेलीग्राम ग्रुप पे मैं अपलोड कर दूंगा ये. कुछ चीजें आई कैनॉट अपलोड ऑन बीओएस ऐप बिकॉज बीओएस ऐप पे बहुत सारी चीजें नहीं आप कर सकते हो. सो यू कैन डाउनलोड इट ऑन फ्रॉम माई टेलीग्राम ग्रुप. Entry will be, yes, how to write the entry, cash account debit to SS capital. So this is how we write these entries, 1 lakh, 1 lakh. Correct? Have I done with the modern approach also, beta? Modern approach हुआ था क्या? Yes. One more time. Identify accounts, cash, SS capital. Cash is a real account. Sorry, not now. Now, modern approach is asset, increasing in asset. And here is capital increasing. Balance debit, credit. So cash, I will write it on this side. Asset 1 lakh. And I will write capital 1 lakh. This is the modern approach. Correct है? So last में screenshots लेना बेटा. Loan taken. चलो, loan taken. Yes. 8% interest rate. That is not important for us. So which are two accounts? Very good. Cash and bank loan. Cash is a real account. Bank loan is a personal account. Cash and bank loan. Debit what comes in and credit the creditor because bank loan is an artificial person. Bank is and we have to pay it back. So हमें ये वापस देना है. So वापस देना है तो हमारा creditor है. हमारा creditor है. Yes. Have you improved your basics बेटा? Tell me frankly where you are facing a problem. हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए. Okay. Are you facing any problem while passing journal entry now because of, yes, my rules made it very simple. Okay. But are you still struggling for passing entry? It will take some time बेटा, 10 days. Don't worry, 10 days लेगा. यदि आपको मेरे साथ कम्युनिकेट करना है तो प्लीज कॉन्टैक्ट पिंपरी चिंचवड़ ब्रांच. वहां पे आप लोगों को बेटा मैं कम्युनिकेट मीन्स आई विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. वहां पे थोड़ी सी फीस होंगी, 1,000 रुपए तक, बस ज्यादा नहीं. एंड यू कैन डेफिनेटली कम्युनिकेट विथ मी ओवर देयर. सो आप लोगों को बिकॉज दैट इज अ ब्रांच फी बिकॉज दे आर चार्जिंग वेरी लेस फीस. बट आई कैन टेक यूर रिविजन ऑल्सो. यू कैन face me. I can interact with you over there because we are taking their Zoom classes on Pimpri Chinchwad branch and it's a branch activity only. So just telling you कि जो भी बच्चे इंटरेस्टेड रहेंगे तो वहां पे कर सकते हैं. कि आपको संकेत सर के सभी टॉपिक्स चाहिए तो हाँ, तो आप लोग वहां पे मिल सकते हो बेटा मुझे. सो नंबर मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा पिंपरी चिंचवड़ का. सर मेरे मेथड से टाइम लगेगा, नो डाउट. सो इट्स नियरेस्ट पुणे ब्रांच है, पुणे के बाजू में ही ब्रांच है ये, पुणे ब्रांच के बाजू में. ओके सर, टाइम लग रहा है राज, बट बेटा when you develop this sense of passing entry तो it will be very easy for you. टेलीग्राम पे बेटा पीयूष कुमार जल्दी हम लोग चैनल बनाएंगे फॉर फाउंडेशन.
यस, संकेत शाह बेटा, मधु नामदेव, संकेत शाह ही चैनल का नाम है। और मैं कोई भी प्राइवेट क्लास से एसोसिएटेड नहीं हूँ फॉर सीए कोर्स। हाँ जी, सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, 1 lakh। प्लीज डोंट वरी, it will take time, but beta definitely long term process. To bank loan, 1 lakh. In case of modern approach, cash and bank loan, cash and bank loan, identify type, identify type, type is asset, bank loan is liability, debit credit, cash 1 lakh on the asset side, bank loan 1 lakh on the liability side. So here we have finished with second entry. Purchase furniture. Tell me beta, purchase furniture. ओके सर, इंटरेस्ट बाद में लेंगे। ठीक है, परचेस फर्नीचर, फर्नीचर and cash. Which type of furniture is real account? Real account. Furniture comes in, cash goes out. Both are real account. So entry will be, this is quick revision for your last session. Cash 20,000, 20,000. Easy now? You can recall it now? Yes, very good. सर हम लोग रिकॉल कर सकते हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट, मॉडर्न अप्रोच बेटा, फर्नीचर एंड कैश, asset increasing, asset cash reduces, debit balance, credit balance. So here on the asset side only, furniture and cash will be there, but here plus 20,000 and here less 20,000. So net effect is 0. On the asset side, net effect is 0. Easy? ठीक है, नो प्रॉब्लम बेटा, टाइम लगेगा। पानी दे रहे हैं मुझे, ठंडा ठंडा पानी इधर ले, बॉटल ले ये। नेक्स्ट, next is goods purchase. So now you can easily recall all these things. Purchase, cash and Sangam. Purchase, cash and Sangam. So purchases is a nominal account, sir. Cash is a real account and Sangam is a personal account. So purchases debit all expenses. Cash goes out, sir, because we purchase something. And sir, we have to pay to Sangam. He is our creditor. Credit the creditor. Rule is personal ka. Debit the debtor, credit the creditor. We have to pay him. This is just revision. If you won't recall it, please watch my previous session once again. आप यदि ये रिकॉल नहीं कर सकते हो तो पहला सेशन वापस याद करो बेटा, पहले सेशन को याद करो। चाय रख दे। सो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश to Sangam. See, purchases will be recorded by both debit, cash plus credit. So 20,000 is called as cash purchase
And Sangam को जो purchase किया, it is a credit purchase. From Sangam we have credit purchase. Yes, sir. We have finished with this. Next. Sir, we have to understand both approaches. Modern approach, yes, beta, purchase, cash, and Sangam. Purchase is beta expenditure, which will be transferred to equity. Cash is asset, which is going to reduce. And Sangam is liability, which is going to increase. So purchases debit expense hai to, credit asset reduces, liability increases credit. So purchases I will transfer to capital because expenses are transferred to capital and expenses will reduce this amount 35,000. Cash will reduce by 20,000. And here Sangam will be shown under the head creditors. Creditors increase 15,000. So net effect minus 20,000. Net effect minus 20,000. Yes, beta. Raj. Okay. Expense increase, beta. Purchases is not asset increase. Purchases is expense increase. Wages and cash, nominal, real, debit all expense, credit what goes out. So entry will be wages account debit to cash, 1,000. And another is wages cash, expenses and asset reduced, debit balance, credit balance. Wages will be transferred to capital because it's an expenses minus 2,000 and cash reduces by 2,000. So till now, no difficulty. Till now, no difficulty. So let's move to homework part. Now homework. Yes. Now let's understand homework part. चलो अच्छे से समझ लो. Salary paid to Anand. Salary paid to Anand. 8,000. Now very important. And total salary is 10,000. See my expenses. This is called as accrual concept of accounting. Now what is accrual concept? Try to understand. Very important word. Very important word. Try to understand accrual concept. अभी आ जाओ बेटा थ्योरी में से प्रॉब्लम है अभी अभी यस होमवर्क पार्ट हैव यू डन विद द होमवर्क हैव यू डन विद द होमवर्क बेटा हैव यू डन विद द होमवर्क हाँ नाउ टेल मी which accounts are there जल्दी से बताओ identify accounts see my expenditure of 10,000 salary which is nominal account see my expenditure is nominal account 10,000 but see my cash I paid only 8,000 and I have to pay salary to Anand. Salary payable to whom? To Anand. So Anand is my creditor. I have to pay him. To Anand. I have to pay salary to Anand, which is a personal account. See, similar to Anand, there are 25 employees whose salary is not paid. देखो बेटा मेरा खर्चा 10,000 है मेरा खर्चा 10,000 है खर्चा 10,000 नॉमिनल अकाउंट ओके वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल यूज किया डेबिट एक्सपेंस इट्स नॉट अ लॉस इट्स एक्सपेंस एक्सपेंस विच इज पेड आउट ऑफ पॉकेट कैश goes out and credit the creditor अच्छा I want to ask you one question
Should I show like this or should I show you on PPT? सो ये वे अच्छा है कि सब लिख के बताऊं या पीपीटी पे डायरेक्ट एंटर करूं? कौन सा वे अच्छा है? विच इज बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग, वेदर शोइंग राइटिंग दिस और वेदर टू शो ऑन पीपीटी? यस, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। शुड आई टेक फिर पीपीटी? आई विल टेक इट एज रिवीजन। कौन सा वे अच्छा है बेटा, जल्दी बोलो। सो सैलरी अकाउंट को डेबिट देंगे, सैलरी खर्चा 10,000 टू कैश 8,000 and to salary payable in which you can see list of accounts, in which you can see list of accounts. This one is better for understanding. Yes, very good. Some students are saying PPD, but some students are saying no sir, no PPD, please write it in this way. ठीक है, return only Sahil wants in PPD. So salary payable 2,000. Screenshot you can take afterwards. सर आनंद अकाउंट नहीं चलेगा? बस साहिल भाई, बस साहिल, बस डोंट गिव सो मेनी कमेंट्स, इट्स इरिटेटिंग। सो सैलरी payable under which you will see list of employees to whom salary is not paid. So don't open आनंद अकाउंट। सी आनंद अकाउंट को कैसे बताएंगे ना, आनंद अकाउंट को कैसे बताएंगे? आनंद को बताने से अच्छा है क्या है, सैलरी पेबल हेड ओपन करो। यू विल ओपन सैलरी पेबल। सैलरी पेबल has four different names. Salary payable can be called as outstanding salary. It's also personal account under which you can see names of employees. आपके names इसके अंडर आएंगे। Provision for salary and accrued salary. Accrued salary. तो salary payable, outstanding salary, outstanding salary, provision for salary, accrued salary are similar names for salary payable. Okay, you can use any word. Outstanding, it's a personal account. Provision, personal account. Accrued salary, personal. Payable means personal. Sir, only salary is nominal. See the difference. Only salary is nominal. But payable, receivable, received in advance, prepaid are personal accounts. We will see, we will have one session on outstanding entries. Don't worry. So salary एक्सपेंडिचर 10,000। सी मेरे जेब से जाने वाला है 10,000। मेरे आनंद की सैलरी 10,000 है, सो 10,000 इज माई एक्सपेंडिचर, 10,000 इज माई एक्सपेंडिचर। आउट ऑफ दैट आई पेड ओनली 8,000। 8,000 इज अ कैश गोज आउट एंड सैलरी पेबल, outstanding salary, provision for salary, accrued salary, under which you will get a list of employees. Please tell me correctly. You know all these entries. You can, yes, you have done in the 11, 12 standard also. Have you applied a same technique? आपने इसी तरीके से सोचा था क्या एंट्री पास करना? आपने इसी तरीके से सोचा था क्या बेटा एंट्री पास करते टाइम? आपने ऐसा ही किया था क्या? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सर मैं ऐसे ही सोचता था या डायरेक्टली एंट्री पास करते थे? डायरेक्ट एंट्री प्लीज डू नॉट पास व्हेन यू आर इन द लर्निंग फेज। जब आप लर्निंग फेज में हो ना, आप अभी बच्चे हो बेटा, छोटे बच्चे हो, और आपको बिल्कुल भी ये करना नहीं है डायरेक्टली एंट्री पास। और एक याद रखो, एंट्री गलत हुआ इट्स ओके, नो मोए मोए, नो मोए मोए।
किसी को नाराज नहीं होना है। ओके, सो एंट्री पास गलत किया, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एंट्री को समझ के करना। अंडरस्टैंड द एंट्री एंड पास द एंट्री। ओके, सो दो इट इज टेकिंग अ टाइम, इट्स ओके बेटा। यू कैनॉट बिकम रजनीकांत इन वन डे। जस्ट मगअप, जस्ट मगअप। हमने डायरेक्टली एंट्री की है? नो सर, हमने डायरेक्टली सोचा था। नो सर, नो सर, नो सर। ओनली रवि राजन इज सेइंग यस, सूरज इज सेइंग यस। वेरी गुड बेटा, सो योर फैकल्टीज आर गुड बेटा। यश इज बोल रहा है ओके। Mugging up entry, no beta. Mugging up is not allowed in CA course. We are people who use this brain. Language was different. Okay. Chalo. So salary entry we have done with homework का first entry. How many of you got the correct answer? Sir, calculator allowed छे। काय को इतना कौनाल ये कर रहा है? बोल रहा हूँ ना, कैलकुलेटर अलाउड है। सर, हमने आंसर कहाँ लिखने हैं बेटा? आफ्टर दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स और लिख सकते हो। निसर्ग, नेट का इशू चल रहा है क्या कुछ? लैग नहीं हो रहा है ना? बेटा आजकल क्या होता है, यस, मुझे भी ट्रेनिंग लेना पड़ता है आपके लिए, बिकॉज यू पीपल आर यंग जनरेशन, सो आई शुड नो क्या मोए मोए चालू है, क्या नहीं चालू है। सब ट्रेनिंग देखना पड़ता है भाई हमें भी। नहीं तो आप लोगों को सिखाना रहता है तो आपके हिसाब से करना पड़ता है ना बेटा। हाँ, आजकल क्या है, तुम लोग एकदम तेज जनरेशन हो गए हो। ओके, नेक्स्ट मॉडर्न अप्रोच। सैलरी, अगेन कैश एंड सैलरी पेएबल। सी, सैलरी इज एक्सपेंडिचर जो कैपिटल में से लेस होगा। एक्सपेंडिचर will reduce your capital minus cash, asset down, asset down, and salary payable, liability increase. Debit, credit, credit. Capital reduces by 10,000. Cash reduces by 8,000, and salary payable plus 2,000. So net effect minus 8,000. Net effect balance sheet minus 8,000. Easy, cheesy, crazy. Yes, beta. Very good. Very good. सेवन एंट्री, चलो 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 चलो, सेवन एंट्री में आ जाओ। स्टेशनरी परचेस, दिस बैच बेटा वेरी स्पेशल फॉर मी। In this batch, beta, I have taken two approaches, traditional also modern approach. If you watch my previous session, there was only traditional approach. But beta, now I shifted to modern approach also. Which one is easy for you? Or both? Stationary purchase, sir, very easy entry. Stationary cash. Nominal, real. Expense goes out. Entry, stationary account debit. Don't write anything. I will give you sufficient time at home. You can take a screenshot and you can do it afterwards. 2000, 2000. Easy. Stationary to cash. Traditional approach easy. Now you tell me modern approach. You tell me modern approach. Accounts and identify type.
अरे वाह, अरे वाह, वाह वाह वाह। वाह अरे वाह मेरे दोस्त। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ऐसे एकदम होशियार बच्चे अपने। एकदम बढ़िया। स्टेशनरी। यार तुम लोगों के साथ 1 घंटा कहाँ पे चला जाता है समझ में नहीं आता। कैश। स्टेशनरी एंड कैश। हाँ, मॉडर्न अप्रोच। स्टेशनरी एक्सपेंस। प्रीति ने लिखा है। एक्सपेंस मतलब कैपिटल में से माइनस। कैपिटल माइनस एंड कैश इज। ओ सॉरी सर, सॉरी, रियल क्यों लिख रहे हो। एसेट रिड्यूसेस। सर मॉडर्न अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच है। डेबिट एक्सपेंस मींस डेबिट। एसेट मींस रिड्यूसेस मींस क्रेडिट। स्टेशनरी कैपिटल में से जाएगा -2000। अरे वाह, अरे वाह सर। कैश में से -2000। सी माई हैंड राइटिंग इज नॉट गुड एक्चुअली। यस प्रिया बेन। कई क्वेश्चन है, तू उठते तारो। सर कैश एंड बैंक डजंट मैटर सर। कैश में से पे करो या गूगल पे से पे करो, पेमेंट करना, पेमेंट बैंक में से तो भी कम होगा। और कैश मतलब हार्ड कैश में से कम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू राइट कैश और बैंक बिकॉज इट इज नॉट एक्चुअल, हमें पता नहीं है ना। स्टेशनरी परचेज वेदर दे टोल्ड कि इट्स पेड फ्रॉम चेक। चेक से दिया या बैंक में से दिया, गूगल पे से दिया, नो। कुणाल बोल रहा है तुम्ही खूप छान शिकवता। मतलब आप बहुत अच्छा सिखाते हो। सर आपकी चाय ठंडी हो जाएगी, यस बेटा, हो। आज ब्रेक ब्रेक लेने की इच्छा नहीं है क्या रे तुम्हारी। यू डोंट वांट टू टेक ब्रेक टुडे। क्या है आज। ओए ब्रेक नहीं चाहिए क्या आज। हाँ, इट इज स्पेसिफिकली गिवन। विधि पटेल कैश और बैंक कब आएगा तो बता दिया मैंने। यस। चलो। 3 एंट्रीज है बस, होमवर्क कंप्लीट करते रहते, ब्रेक ब्रेक के बाद आएंगे। परचेस एंड सेल्स की एंट्रीज करते हुए। परचेस एंड सेल्स की एंट्रीज करते हुए, ओके। गुड्स सोल्ड माय डियर फ्रेंड्स, गुड्स सोल्ड। गुड्स बेचे, बेचे मतलब एक कैश आएगा, एक आशीष भाऊ आएगा। एंड सेल्स मतलब इनकम आएगा। सेल्स। कैश इज अ रियल अकाउंट। आशीष इज अ पर्सनल अकाउंट। एंड सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट। कैश डेबिट कम्स इन। डेबिट द डेटर बिकॉज उधारी। आशीष इज अ डेटर। एंड क्रेडिट इनकम। क्रेडिट इनकम। अरे ब्रेक भी नहीं चाहिए क्या। एक बजे नमाज है, उसके पहले कर दीजिए बेटा। ठीक है, विल ट्राई। एक 10 एंट्रीज करते हो, उसके पहले करने की कोशिश, एक 10 मिनट एक्स्ट्रा होगा। कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट। 18,000। आशीष इज अ डेटर, डेबिट द डेटर, पैसा आने वाला है। 25,000 टू सेल्स अकाउंट। 43,000 करेक्ट ना, 18 + 25, हाँ जी। 43,000। मॉडर्न अप्रोच कैश। आशीष। सेल्स। कैश बेटा एसेट इंक्रीज। आशीष एसेट इंक्रीज डेटर है।
सेल्स कैपिटल इंक्रीज, इनकम है ना, सेल्स इज इनकम, सेल्स इज इनकम प्लस मीन्स कैपिटल प्लस डेबिट, डेबिट कैपिटल इंक्रीज मीन्स क्रेडिट, तो कैश जाएगा इधर 18,000, डेटर्स मतलब आशीष 25,000, कैपिटल 43,000 प्लस, अरे वाह रे वाह मेरे शेयर लोग, क्या बढ़िया बात है। ओके, इजी 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 इजी। चलो हो गया बेटा, हो गया। नाइन्थ नंबर होमवर्क, इन्वेस्टमेंट इन एफडी, इन्वेस्टमेंट इन एफडी, बैंक एफडी, specific bank and cash account. It might be ICICI, it might be SBI, it might be Central Bank, it might be Bank of Baroda. So this is the personal account. Bank is a personal and cash is a real. Cash is a real. Here you can write debtor also because you will collect this money afterwards. No, अभी एफडी करोगे वापस लोगे, सो डेबिट द डेटर का रूल अप्लाई करेंगे। अरे वाह सर क्या बात है। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, credit what goes out, cash goes out in the bank. Okay, so FD debtor and entry क्या होगी, बैंक FD account debit to cash after 6 months is, we'll see it later, we'll see it later, no problem, after 6 months interest वगैरह, interest we won't pass any entry, so 50,000 easy છે, एकदम easy, अरे बोलो easy છે के। ओके, हाँ राज, आज राज फुल मस्ती के मूड में है। ओके, आज राज फुल मस्ती के मूड में है। बैंक एफडी एंड कैश, asset increase, asset decrease, debit, credit, bank FD plus 50,000 and cash less 50,000. So net effect is zero. Net effect is zero. ठीक है, over. Now depreciation on furniture. Depreciation. Depreciation means what? Science background student. Depreciation means reduction in value of asset. See beta, I purchase one car. Whether car is giving us same performance year after year, no. स्टार्टिंग में कार बहुत स्मूथली रन हो रही थी, देन इट बेटर टेक्स मेंटेनेंस कॉस्ट, इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगी, माइलेज अच्छा नहीं देगी, इट वोंट गिव सेम माइलेज, which is called as depreciation. So you bought one car for 15 lakhs, but every year you have to reduce some amount because it is going to scrap after certain years. So depreciation and furniture are two accounts. One is nominal, second one is real. Nominal and real. So nominal account is there and real account is there. Correct? Because of wear and tear of the asset. Depreciation is loss. It's not expense. You are not paying out of pocket. And real account, your furniture value reduces, goes out. Your furniture value reduces means goes out. So depreciation to furniture 2000, 2000.
debit, depreciation. Identify accounts, depreciation furniture, it's a loss, capital में से minus, asset reduces, debit credit, capital reduces by 2000 and depreciation asset reduces by furniture reduces by minus 2000. Beta, now you can take a screenshots. 6 7 8 9 10. Yes, bus. Take a screenshot of 6 number. एक second. 6 number screenshot. Okay. See, थोड़ा सा कट हो रहा है. हाँ. Now you can take a screenshot. हाँ. लिया क्या? हाँ जी सर. लिया लिया लिया. Next. Stationery purchased. Screenshot लो बेटा. Screenshot लो. Yes. एकदम हाथ घुमाना है सिर्फ स्क्रीन पे आपको. Goods sold. Goods sold. Screenshot लो बेटा. Very good. आगे 9 number entry. Investment in FD 12% and after 6 months is of no use. Huh? No use. Yes. And last but not least, depreciation on furniture. Depreciation on furniture. Yes. So we have finished with all these entries, my dear friends. Now you can take a break. A break के पार. ब्रेक होगा 12:26 हुआ है. 12:40 वी विल मीट एट 12:40 to 1:15. और ब्रेक के पार आज मैं सिखाऊंगा परचेस रिलेटेड एंट्रीज एंड सेल्स रिलेटेड एंट्रीज. परचेस रिलेटेड एंट्रीज एंड सेल्स रिलेटेड एंट्रीज. तो जल्दी से ब्रेक के बाद का सेशन मिस मत करियो, बहुत इंपॉर्टेंट है. वी आर गोइंग टू सी परचेस रिलेटेड एंट्रीज एंड सेल्स रिलेटेड एंट्रीज. ओके, थैंक यू.
चलो वेलकम बैक वंस अगेन बेटा। और अभी मैं आपको समझाने जाने वाला हूँ बहुत ही बढ़िया सेशन। हियर नाउ वी आर गोइंग टू सी ओनली एंट्रीज रिलेटेड टू परचेस, ओनली रिलेटेड टू परचेस। सी बेटा, दिस टाइम I am developing these questions only for your conceptual clarity, only for your conceptual clarity. Okay, chalo. See beta, now entries related to purchases. Try to understand. Don't write anything. If you want to write, you can write it afterwards. You just try to focus next 15 to 20 minutes. Next 25 minutes are very important because now I am showing you real life examples also. Real life examples also, beta. So please, please, please make sure now you will focus for next 25 minutes. Okay? Dekho. You remember that purchases goods from Sangam rupees 20,000. So what will be the entry? Chalo, tell me it in the comment section. Who is answering very fast? Tell me, identify accounts and identify type. You can write like purchases dash account and second one account dash account. Yes. There are two accounts now. Who is answering very fast? Yes. चलो बेटा जल्दी 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 करो. Purchases and chalo. Yes. Now I want your cooperation. How many accounts are there? Yes. Very good. Purchases and Sangam. Very good. Who wrote very fast? And please participate. Rashik Fatima, SRO student. सबसे तेज आंसर purchase and Sangam. We will do today by traditional approach. Modern approach we'll see in next session. Purchase is beta nominal account and Sangam is personal account. Correct? Hai? Don't write anything. Debit all expenses. Debit all expenses. And Sangam credit the creditor. Sangam को payable है. We have to pay him because we purchase him. So हमें उसको पैसा देना है. देना है तो creditor है. Creditor means payable. Payable to Sangam. So entry will be purchases account debit to Sangam account. Okay. You can see here, we have credited Sangam account. We have credited Sangam account. Sangam को credit किया है. Correct है? Now, if we open ledger account, now what is ledger that I will explain you later. Okay. See, science background student. This is ledger account. This is journal entry. And see, this is ledger account, Sangam account. Left hand side is called as debit. Left hand side in accounts, left side means debit. In ledger, this is a T form. And science background student, this is a right side. Ledger, you can visualize overall account about Sangam. In journal, you will get all information together. But in ledger, see, journal means all entries together. Science background student.
And ledger means you can see specific account. You can see specific account, full data in that account. Specific account, full data in that account. See, I will show you the ledger. I will show you. Now see, beta. Hmm, see, I will show you the ledger. See, now I will show you in our restaurant, we have one ledger account, not in our restaurant. I got one account. Hmm. You can see here. See, this is Deepak Dairy account. Deepak Dairy, sorry. Deepak Dairy is a books of Deepak Dairy. And you can see here, this is our restaurant account, Relax Pure Veg. So, beta, in Deepak Dairy, we purchase something from them. So, for Deepak Dairy, beta, it is sales. एंड रिलैक्स इज अ डेटर फॉर देम क्योंकि वो सेल करते तो रिलैक्स से पैसा आने वाला है सो यू कैन सी द डेबिट बैलेंस इन दीपक डेयरी यू कैन सी दिस डेबिट बैलेंस अप्रैल 2 वी बॉट दे सोल्ड नॉट वी बॉट दे सोल्ड वी बॉट इन आवर बुक देयर इज दीपक डेयरी अकाउंट हमारे बुक में दीपक डेयरी का अकाउंट होगा उनके बुक में रिलैक्स प्योर वेज का अकाउंट होगा तो रिलैक्स से उनको पैसा मिलने वाला है सो फॉर देम रिलैक्स इज अ डेटर तो देखो डेबिट See debit. When we settle the account 2237, we paid them 2237. So this is better credit. So giver बन जाएंगे हम लोग. Debtor becomes giver. तो उनके बुक्स में दीपक डेयरी के बुक्स में हमारा अकाउंट डेटर है. So we settle that account and at the end you can check. See what is the debit balance? We have to pay 2,01,593. No, even more than that. 2,05,000. Even more than that. हाँ. 3,11,763. We have to pay them. So this is a closing balance. You can check here what we have to pay them because they are receivable from Relax. For them, receivable from Relax is 3,11,763. ये बैलेंस है अभी कल ही मैंने अकाउंट सेटल किया वी पेड देम यस्टरडे ओनली देखो दिसंबर 20 को ये बैलेंस है अभी हमने कल उनको 3,12,000 रुपए दे दिया एंड वी सेटल देयर अकाउंट ओके सो उनके लिए रिसीवेबल था यू गॉट द कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में ऐसा होता है सी दिस इज नॉट लेजर का करेक्ट फॉर्म सी इन एग्जाम वी हैव टू प्रिपेयर लाइक दिस डेबिट एंड क्रेडिट हमें कैसे बनाना होता है इन रियल एग्जाम वी हैव टू प्रिपेयर in this format debit left hand side credit right hand side and sangam in between but in real life in tally see the format is different debit it's a tally format debit and credit but traditionally when munimji prepared accounts it's left hand side right hand side okay and software gives something which is different see beta software mein thoda sa alag aayega but ultimate reading is same they write debit credit and balance column immediately okay in real life you will get balance immediately due to software but theoretically we write closing balance every 15 days 30 days so we are not balancing every time because it's not a computational balancing it's not a software generating balancing so software में रोज का बैलेंस आता है सॉफ्टवेयर में रोज का बैलेंस आता है पर रियल लाइफ में एंड इन बुकिश नॉलेज वी टेक नॉर्मली ऑन 31st ऑफ मार्च हमारे बुकिश नॉलेज में हम लोग 31st मार्च में लिया जाता है ओके आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज रियल लाइफ भी पता होना चाहिए सो इन रियल लाइफ वी हैव डेली अकाउंट्स सी तो हमने संगम को क्या किया था बेटा चलो कम टू अवर एग्जाम्पल संगम यस एंजॉयड बेटा हाँ इट्स लुक लाइक बैंक पासबुक थैंक यू राज
Raj is saying, sir, thank you for showing real account. Yes, beta. It's my duty and responsibility to make it very simple in real life also. You can correlate your accounting in real life. तो बेटा मैंने सिखाया हुआ मजा आएगा ना आपको. हाँ जी. तो परचेस एंड संगम ये दो अकाउंट्स थे. तो संगम को हमने क्या किया? क्रेडिट साइड. साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, संगम को हमने क्या किया? क्रेडिट. क्रेडिट किया तो कौन से अकाउंट से क्रेडिट करना है? सी, ऑन क्रेडिट साइड वी ऑलवेज राइट स्टार्टिंग विद बाय. इट्स अ ट्रेडिशनल मेथड. हम लोग हमेशा बाय से शुरू करते हैं. क्यों बाय से शुरू करते हैं? क्योंकि ये ट्रेडिशनली करते आ रहे. डेबिट में लिखना होगा तो टू, क्रेडिट में लिखना होगा तो बाय. इट्स वेरी सिंपल टेक्निक. सो बाय purchases. In Sangam account, we cannot write by Sangam. Opposite account. संगम के क्रेडिट साइड में अपोजिट अकाउंट आएगा. सो बाय परचेस कितना? बाय परचेस कितने का परचेस किया बेटा? 20,000. सो वी परचेस ऑफ 20,000. सो संगम के क्रेडिट में 20,000. सी, संगम इज माय creditor. Sangam is my creditor. And whenever creditor, it starts from credit side. So plus credit plus. Credit से शुरुआत होगा. We will write first on the credit side. There are some accounts in which we will write from debit side first. So debit plus. And when you write from credit side first, तो it is credit plus. देखो बेटा, आपने शुरुआत किया, जब भी आपने क्रेडिट से शुरुआत की, लाइबिलिटी को शुरुआत करेंगे क्रेडिट से, एसेट को शुरुआत करेंगे यहां से, डेबिट से. सो नो वन विल टीच यू इन 11th 12th स्टैंडर्ड टू विजुअलाइज द अकाउंट्स. नाउ नेक्स्ट स्टेप, यू शुड विजुअलाइज योर अकाउंट्स. आपका अकाउंट्स का जर्नी अभी क्या होगा? आपको अकाउंट्स को विजुअलाइज करते आना चाहिए. आपको अकाउंट्स को विजुअलाइज करते आना चाहिए. ठीक है. सो क्रेडिट से शुरुआत किया. ही इज अ क्रेडिटर, सो विल स्टार्ट विद द क्रेडिट साइड. संगम लेजर विल स्टार्ट विद क्रेडिट साइड. ही इज अवर क्रेडिटर. ठीक है. 20,000 का परचेस किया. फर्स्ट एंट्री क्लियर? फर्स्ट एंट्री क्लियर? यस. व्हाट अबाउट सेकंड एंट्री? सो नाउ 20,000 इज पेएबल. लेजर क्या बता रहा है? लेजर शोज वी हैव टू पे 20,000 टू संगम. ही इज अवर क्रेडिटर. नाउ व्हाट हैपन? we paid we paid to Sangam 17,000. Sangam was creditor and now he becomes receiver in the second entry. Creditor becomes receiver. So Sangam का balance cancel करेंगे. How to cancel it? By giving opposite effect. By giving opposite effect. तो हम लोग क्या करेंगे? संगम को cancel करेंगे by giving opposite effect. Sir, yes sir, yes sir. सर सिलेबस कब तक खत्म होगा भाई अनिल? प्लीज डोंट डिस्ट्रैक्ट मी. ठीक है. सिलेबस 2 ढाई महीने 3 महीने 4 महीने चलेगा. इट्स अ सीए कोर्स. तो आप प्लीज थोड़े पेशेंस रखिए एंड अभी पूरा फोकस कीजिए. अभी इसके बारे में चर्चा मत कीजिए सिलेबस कब खत्म होगा. अभी जो है उस पे ध्यान दीजिए. जो है उस पे ध्यान दीजिए. डोंट डिस्ट्रैक्ट यू. सो संगम and cash are two accounts. Sangam and cash. Sangam is a personal account. But now this is a question of settlement. See, this is a question of due. So इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा due. Due is there. First entry is due. But second entry is settlement. Sangam settled his account. Cash, real. Debit, the receiver. Now he becomes receiver. We paid him account. So Sangam account settled. So Sangam account का settlement हुआ तो receiver. यस ठीक है बेटा. वान्या बप्पू. ओके. ओके. एंड कैश क्रेडिट व्हाट गोस आउट. अभी तक अंडे से बाहर नहीं आए तो पूछने का उड़ना कब सीखना है? अरे जस्ट बाहर आ रहे हो अभी आप लोग अंडे से. यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. सी इंस्टीट्यूट वांट्स टू डेवलप योर नॉलेज. इंस्टीट्यूट चाहती है ना कि आपका बेसिक स्ट्रांग हो.
So entry will be Sangam account debit. How to write this? Sangam account debit and space deke to cash 17,000, 17,000. Now where will you write? संगम को डेबिट दिया तो ऑन द डेबिट साइड टू कैश 17,000. In Sangam, you won't write Sangam account. In Sangam, you will write cash account, debit side, debit. So creditor becomes receiver. See the entry. Now, what is the balance which left? Just tell me it in comment section. अभी कितना पे करना है संगम को? By looking into account, we will understand. So credit side is more, means we have to pay him. What we have to pay him? What is the balance that we have to pay? चलो जल्दी से comment section में लिखो. What is the balance that we pay? आपको कांटेक्ट करना होगा बेटा और पिंपरी चिंचवड बैचेस तो 7887878740 पे कांटेक्ट कीजिए. इट्स अ पिंपरी चिंचवड ब्रांच नंबर. सो आप उस पे आई कैन नॉट गिव यू माय पर्सनल नंबर, तो आप उस पे कांटेक्ट कर लेना एंड यू कैन टेक द एडमिशन. ओके, बट details will you will get it afterwards, but you can enroll your name and they will give you contact. 7887878740. By purchases beta 17,000. Yes, 3,000 is a balance. Approach, modern approach बेटा बाद में. Okay. Yes. By purchases to cash. You got this settlement. 3,000 is a balance. Yes, very good. 3,000 is a balance. Rupees 2,000 discount received from Sangam for balance. Discount received from Sangam for balance. Sangam and discount received. Discount received is my gain. Is my gain. I received discount. I have to pay to Sangam 3,000. But now I received discount. It's a personal account. And discount received is a gain. Debit. Creditors cancelled. See my creditors. Now I don't have to pay that 2,000. So creditors cancelled. And this is nominal account. Sorry. So it's a gain. Personal Q because I cancelled creditors. I cancelled. Receiver or cancellation of creditors. Creditors credit balance. Now it cancelled. So how much to discount? Received 2,000. 2,000. Okay. So I cancelled 2,000. Now what is the balance that I have to pay? 20, 17 and 2 cancelled. So I have to pay only 1,000 now. But what happened? You could not paid rupees 1,000 to Sangam. अभी 1,000 ही देना बाकी है. Oh,
could not pay. When beta we could not pay any amount, in accounting language, it is called as deficiency, not bad debts. Bad debts when someone hasn't pay you. जब हमारा कोई पैसा डुबाएगा तो उसको बैड डेट्स बोलते हैं. हम किसी का पैसा डुबाते हैं तो नो बैड डेट्स, इट्स अ डेफिशिएंसी. कौन सा अकाउंट? डेफिशिएंसी. नो बैड डेट्स अकाउंट. बैड डेट्स इज वेरी बैड वर्ड. बैड डेट्स itself it's a bad word. Okay, so what is the word? When हम किसी का पैसा डुबाते हैं तो bad debts. So it's like a bad debts. Yes, like a bad debts, but it is deficiency. तो कौन से दो अकाउंट आएंगे? संगम का अकाउंट कैंसल हो जाएगा एंड डेफिशिएंसी अकाउंट. संगम अगेन पर्सनल and deficiency is nominal. Nominal. Okay. So Sangam account, debit, creditors cancelled, and credit gain. Credit is gain. So entry will be Sangam account debit. Sangam account debit to deficiency account. And what is the balance? Balance is rupees 1000. Now see, there is no balance in Sangam account after deficiency. So Sangam account is closed. क्या बोलेंगे? Sangam account is closed. In a nutshell, in a summary. अच्छा इधर लिखना रहेगा यार. Sangam account debit to discount received 2000. See, so what are entries related to purchases? So entries related to purchases in a nutshell. Revision. So how to revise it? Revision. What is the first entry? Purchases on credit. What is the second entry? Payment. What is the third entry? Discount received. And what is the fourth entry? Deficiency. So you have to revise in the same way. What is the entry for purchases on credit? Purchases account debit to creditors account. What is the payment entry? Creditors account debit to cash account. Creditors CRS. Simple CRS. Okay. नहीं तो full लिखो. Discount received. Creditors cancelled. Creditors account debit to discount received. And what is the entry for deficiency? Creditors account debit to deficiency account. What is the pro forma? Pro forma of creditors account by credit plus debit minus. In this way, you have to recall entries. Creditors increase due to purchases, reduces due to cash, reduces due to discount received, reduces due to deficiency, and remaining is by balance brought down, which is of last year, and to balance carried down, which is of current year. And this is how you have to learn accounts. इस तरीके से आपको अकाउंट्स को लर्न करना है. जिसको फॉर्मेट आने लगे, who can visualize this format, then beta your account is developed. What expects institute from you? What expects institute from you? Okay. अभी बताइए, now you are developing yourself. अभी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, यस सर अभी हम लोग सोचना शुरू किए. देखो सीखना था, पास्ट में जो सीखा था इट इज ओनली एंट्रीज. सीए कोर्स क्या सिखा रहा है? सीए कोर्स विजुअलाइजेशन सिखाता है. 11 12 स्टैंडर्ड ओनली रिकॉर्डिंग इज देयर इन योर
Book means in your brain. Here, you can analyze, you can interpret, you can take decisions, you can visualize this by looking into account. ये सीए कोर्स सिखाता है. This makes the difference between 11 12 faculties and सीए कोर्स की faculties. आई होप सीए कोर्स की फैकल्टीज आपको समझ में आ रही है. एटलीस्ट मी. बिल्स रिसीवेबल भी होता है. बिल्स रिसीवेबल भी होता है. यस. नाउ टेल मी. एक बार हम लोग हिंदी में देख लेते हैं रिवीजन. देखो भैया, बहुत सिंपल छे. एकदम सिंपल सिंपल छे. परचेसेस करना मतलब खर्चा करना. परचेसेस अकाउंट डेबिट. क्रेडिट पे किसी को पैसा देना है. देना है तो क्रेडिटर है. रूल को अप्लाई किया. परचेसेस एक्सपेंस, क्रेडिट द क्रेडिटर. यस सर, पहला एंट्री समझ में आया. परचेस को डेबिट दिया, क्रेडिटर्स को क्रेडिट किया. क्रेडिटर्स अकाउंट ओपन किया. अकाउंट ओपन किया. सर उसको पेमेंट किया. पेमेंट किया तो बैलेंस नीचे जाएगा. तो भाई क्रेडिटर बिकम्स रिसीवर हो जाएगा. क्रेडिट को डेबिट दो, कैश तो तेरे से जा रहा है. कैश इज अ रियल अकाउंट गोज आउट. यस सर, एंट्री याद हो गया. डिस्काउंट ऐसा दिल में बैठना चाहिए बेटा. एंट्रीज ऐसा दिमाग में बैठ जाना चाहिए. क्या सर ने खूब पढ़ाया, पूरा दिमाग में बैठ गया. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड. तीसरी एंट्री, सर डिस्काउंट दे दिया. वो बंदे ने डिस्काउंट दे दिया. क्रेडिटर्स को डेबिट दिया. डिस्काउंट रिसीव्ड को कैंसिल नहीं करना. क्रेडिटर्स को कैंसिल करना है. डिस्काउंट रिसीव्ड तो मेरा गेन छे रे, गेन छे. सो डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कर दिया. एकदम इजी. एंड डेफिशिएंसी, सर उसने पैसा डुबाया, हमने पैसा डुबाया. हमने, उसने डुबाया तो बैड डेट्स बोला था. हमने डुबाया. डेफिशिएंसी बोलने का क्या बोलने का? डेफिशिएंसी बोलने का. सभी परचेस रिलेटेड एंट्री एक ही चीज में. ये नया है न्यू कोर्स में. ये मैंने इंट्रोड्यूस किया. इस बार मैंने क्या बोला? सभी एंट्रीज को एक साथ नहीं करना है. एक परचेस की एंट्री अलग करेंगे, सेल्स की एंट्रीज अलग करेंगे. सेल्स की एंट्रीज अलग करेंगे, परचेस की एंट्रीज अलग करेंगे. सो परचेसेस ऑन क्रेडिट, पेमेंट में, डिस्काउंट रिसीव्ड, डेफिशिएंसी. एक नंबर सर. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेफिशिएंसी पूरा समझ में आ गया. पूरा दिल में बैठ गया सर. पूरे एंट्रीज समझ में आ गए. यस सर. पीसीएम स्टूडेंट्स को नो प्रॉब्लम सर. आई एम टेलिंग यू, साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, डोंट वरी. डोंट वरी. ये जो भी है ना, आपको सब समझ में आने वाला है. डोंट वरी, ये सब समझ में आने वाला है. आपके चश्मे में रिम लाइट आ रही है? हाँ बेटा, आ रही है. बिकॉज बहुत पास में कैमरा लाइट जो है ना, वो बहुत मायने रखती है टू शो दिस. तो हो सकता है मेरे चश्मे में आ जाएंगे. हाँ, अभी नहीं आएगा. पर ऑप्शन नहीं है बेटा, मेरे चश्मे में वो रिफ्लेक्ट होने वाला है. सो आप उसको क्यों देख रहे हो? चलो बेटा, इसको देखो ही मत. हाँ जी सर, नहीं देखते हैं. अभी नहीं आ रही है. चलो. क्या बात है सर. डेफिशिएंसी कैपिटल में जाएगा ना? नहीं सर बेटा, पी एंड एल में जाएगा वो. ये फर्क है एक अकाउंट्स में और एक सीए में. यस बेटा. ऑसम 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 सर. आई कैन विजुअलाइज दिस. आई कैन विजुअलाइज दिस. राइट डाउन इट इन द कमेंट सेक्शन नाउ. आई कैन विजुअलाइज सर. एनी एंट्री आई कैन विजुअलाइज. चलो, सो आज का होमवर्क है. आज का होमवर्क है सेल्स की एंट्री. चलो पहले तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो. आज तो ये परचेस की एंट्री करके रहेंगे. होमवर्क में क्या करेंगे सर? होमवर्क में सेल्स की एंट्रीज करेंगे. तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट्स लो. चलो 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 चलो. स्क्रीनशॉट्स. एंट्रीज रिलेटेड टू परचेसेस विल बी द हेडिंग. 100 पेजेस के बुक में लिखना है. Deficiency is a nominal account. Yes, sir. Deficiency is a nominal account. सर वापस पैसा दिया, नियत बदल गई तो डेफिशिएंसी. बैड डेट्स रिकवर्ड देखेंगे बेटा. नेक्स्ट टाइम देखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड. क्या बात है भाई. एक नंबर समझ में आया. 2 घंटे खत्म हो गए बेटा, बोलते बोलते. चलो, एक स्क्रीनशॉट्स के पहले ये ग्रुप में टेलीग्राम में ऐड हो जाना. फाउंडेशन June 24, स्पेस देके June 24 विथ SS. June 24 विथ SS. जून और 24 के बीच में भी शायद से स्पेस है. चेक कर लेना. June 24 विथ SS. SS संकेत सर. इस पे ज्वाइन हो जाना. मैं आपको ग्रुप पे कुछ नोट भेज दूंगा. डोंट वरी.
ओके 11th 12th साइंस वाले डोंट वरी बेटा। आप सर सिस्टम हो, सिस्टम सिस्टम हो, चलो अच्छी बात है। पेड टू संगम, पेड टू संगम, संगम टू कैश, ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन अनिश लास्ट, अभी नेक्स्ट सेशन में, अभी टाइम खत्म है, नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू सी दिस। बट टुमारो बेटा, डे आफ्टर मंडे को आई मस्ट नीडेड your all entries of purchases and sales। पिंजारी जी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो बेटा, उधर ये मैं नोट्स जो है छोटे छोटे डाल दूंगा। यस, सो ये हो गया नंबर थ्री, नंबर थ्री, नंबर थ्री, नंबर थ्री, नंबर थ्री, रुपीज 2000 डिस्काउंट। बेटा टुडे सेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर फोर, आज तो बहुत लाइक्स दिए बेटा आप लोगों ने, ऐसे क्या एकदम। यस 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 यस। एंड एंड बेटा रिवीजन भी आप लोग लिख सकते हो, दिस इज अ रिवीजन। एंड सेल्स की उल्टी एंट्रीज होंगी अभी। यस, ये रिवीजन है आपकी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, एंड सेल्स रिलेटेड एंट्रीज, सोल्ड गुड्स, यस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सोल्ड गुड्स, देन यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम दक्ष, देन यू हैव allowed rupees 3000 discount, and then you have bad debts, and then Daksh account. Okay, do this homework. Thank you once again for keeping the patience till last minute. And I enjoyed a lot with you, beta. I know कि next session में आप लोग फटाफट देखो, purchase to creditors, creditors to cash, discount received की creditors to discount received. See, creditors cancel करेगा, discount received is my gain, and deficiency की creditors cancel होगा, deficiency account को credit होगा। इसी तरीके से बोलना है और confidence बढ़ाना है। So next time बेटा इसी तरीके से देखेंगे। And till tomorrow, बेटा, thank you, bye bye, take care, love you.